Shri Purushottam Das Pasari, Honorable Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, Dr. Upinder Dhar, Honorable Vice Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, Shri Kamal Narayan Ji Buradia, Shri Vaishnav Honorable Secretary, Shri Vaishnav Vidyapeeth Trust, Dr. T.K. Mandal, respected Head, Center of Excellence in Happiness Studies, respected dignitaries, heads of institutes and departments of Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, delegates, colleagues, and all students who are attending the conference on digital platform. A happy welcome to all. On behalf of Center of Excellence in Happiness Studies, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, it gives me immense pleasure to welcome you to the 4th National Conference on Happiness, which is called Anand-Amrit. So welcome to Anand-Amrit 2022 on the theme Hope, Health and Happiness, Challenges and Solutions. To mark the beginning of the conference and invoke the blessings of Ma Saraswati, may I now request the technical team to please play the virtual lighting of lamp and Saraswati Vandana AV. Soma Jyotirgamaya Nityarmamritam Gamaya Om Shanti 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 Ya Kundendu Tusharahara Dhavana Ya Padmasana Ya Brahmachyuta Shankara Prabhrutibhihi Devai Sada Vandita Sama Patu Saraswati Bhagavati Thank you, sir. I now request Honorable Chancellor and Honorable Vice Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, to welcome the Chief Guest, Shri Akhilesh Argal, in virtual mode. Thank you, sir. At Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, we make every effort to lead by providing opportunities and platform by organizing conferences from time to time. To know more about the objectives of organizing Anand-Amrit 2022, may I now have the pleasure of inviting respected Dr. T.K. Mandal, Head, Center of Excellence in Happiness Studies and Convener Anand-Amrit 2022 for his address. Thank you very much, Anu. Chief guest, Shri Akhilesh Argal, CEO of Rajya Anand Sansthan, Government of Madhya Pradesh. Distinguished plenary speakers, Shri Puneet Parasar, Shri Supratik Bhattacharya, Shri Tapas Kumar Das, Honorable Chancellor, Shri Purushottam Das Ji Pasari, Honorary Secretary of Shri Vaishnav Vidyapeeth Trust, Shri Kamal Narayan Ji Buradia, Vice Chancellor, Dr. Upinder Dhar,
deans, heads of constituent institutions and departments of the university, paper presenters, fellow researchers, faculty and staff colleagues, students, and other attendees. A very good morning and a warm welcome to all of you to the 4th Happiness Conference of the university, which Anu has already mentioned, been christened as Anand-Amrit 2022. As you are aware, this is the 4th Happiness Conference that we are going to have, and hopefully this will be the last one in the series of virtual conferences, and we'll be having a physical conference next year. Just recently, 10 days back, the world celebrated International Day of Happiness on 20th March. And incidentally, this year marks the 10th anniversary of the World Happiness Report as well, which saw publishing of the World Happiness Report on 20th March. Since 2013, United Nations has been celebrating this day of 20th March and has been publishing World Happiness Report. However, as we all know, for the last couple of years, the aspects of happiness has taken a beating due to COVID, and now due to the Ukraine war. All the countries in the world are, to some extent or the other, have been affected. There are a lot of debates on the basis on which World Happiness Report is prepared. However, there has been a strong research on which the World Happiness Report was prepared. In fact, there's a full chapter or a large part of a chapter in this year's World Happiness Report, which dedicates it to nullifying the impact of westernization of happiness in the World Happiness Index study. Finland happened to be the happiest country in the world for 5 consecutive years now, including this year, 2022. As far as India is concerned, there is a little solace that we can take from this year's report, since India has bettered its position from 139 to 136 in this year's happiness report. A few countries which are behind India in terms of world happiness ranking are the ones which, largely they are African countries, very small: Tanzania, Rwanda, Uganda, and Sierra Leone, and countries like this. 2021, as I said, the rank was 139, and this year it is 136. 2020 it was 144. 2019 it was 140. 2018 it was 133. 2017 it was 122. 2016 India ranked 118. 2015 117, and so on. I read out the ranks just to tell you that India has been sliding till last year in terms of world happiness ranks, except this year, which saw a little slight improvement in the rank. The state of Madhya Pradesh, where we all belong, has been leading the work on happiness through establishment of happiness department for the first time in India in 2016. And taking cue from there, we at Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya also established the Center of Excellence in Happiness Studies, primarily with 3 objectives. Number 1, to facilitate research in the area of happiness. Number 2, to explore the factors which lead to happiness and well-being. Number 3, partnering with organizations, government bodies, etc., to help them discover the route to happiness for their members through research and consultancy assignments, and to promote happiness in the university fraternity through various activities related to happiness and well-being. And for last 4 years, we have been regularly doing these activities, conducting these activities. As I said, this is the 4th happiness conference which we are organizing under the banner of Center of Excellence in Happiness Studies in Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. The first one that we had
was in 2019 with the theme Embracing Happiness for Rejuvenating Workplace and Environment. In 2020, the theme was Positive Thinking and Happiness, Emerging Realities. 2021, we kept the theme of Happiness in Global Perspective, Prospects and Challenges. And this year, the theme is Hope, Health and Happiness, Challenges and Solutions. I read out the themes just to make you all aware that the themes have been very carefully chosen under the guidance of our Honorable Vice Chancellor to reflect the contemporaneous of the areas of research in happiness, and thereby encouraging several researchers who have so far contributed with several research articles and their works in these 4 editions of happiness conferences. As I said, we continue to encourage researchers across the country to do work in the areas of happiness, particularly in the emerging areas of happiness, different perspectives of happiness, right from social to economical to political to psychological, as well as we also endeavor to continue our involvement in other activities leading to happiness. This year, Anand-Amrit 2022 will be like in previous years for 1 day duration, starting with this inaugural session, which will be followed by a plenary session involving 3 very eminent speakers from different fields and from different parts of the country. This following this plenary session, we'll have 2 concurrent technical sessions where the researchers would present their work in front of the panelists, and that will be concluded. The day will come to a conclusion with the valedictory session. So with this, I once again welcome all of you to Anand-Amrit 2022 and wishing all of you a very happy and prosperous time ahead. Thank you very much. Thank you, sir. I now have the honor of inviting our dynamic, versatile mentor and leader, Dr. Upinder Dhar, Honorable Vice Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, for proposing the welcome address. Good morning to all of you. Chief guest on this occasion, Shri Akhilesh Argalji, Chief Executive Officer, Rajya Anand Sansthan, Government of Madhya Pradesh, Honorable Chancellor of the University, Shri Purushottam Das Ji Pasari, Honorary Secretary of the Vidyapeeth Trust, Shri Kamal Narayan Ji Buradia, Head of our Center of Excellence in Happiness Studies, Dr. T.K. Mandal, all directors, faculty colleagues, guests, resource persons, and my dear students. Dr. T.K. Mandal has already shared that where do we stand in the world ranking. पूरी वर्ल्ड की रैंकिंग हैप्पीनेस, लेवल ऑफ हैप्पीनेस की होती है हर साल, एंड रिसेंट रैंकिंग जो हुई थी 146 कंट्रीज का डेटा लिया गया था, उसमें we stand in 130s or so. So we have a long way to go. In general, people are not happy. And on the other hand, Finland is continuously for last 5 years emerging as the happiest country in the world. Finland, Denmark, Switzerland, Netherlands, these are the countries which are ranking on the higher side so far as happiness state is concerned. Even latest is after COVID, or we can say during COVID, even then this rank is maintained by Denmark and other countries, Finland and other countries. If we
see the words used by our father of nation, Mahatma Gandhi. He once said that happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. अगर ये तीनों में हार्मनी हो, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं, if the three are in harmony, what we experience is anand or happiness. Behavioral psychologists often deliberate on ways to create a happy society. There are so many researches available to explore and understand how to remain happy, what should be done to remain happy. Personal development articles and books offer the secrets to happiness. And you can see that a lot of literature is available, already available. Some people conclude that money plays a role in the pursuit of happiness. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन there are researches which have disproved it. कई researches हुए हैं throughout world और उसमें consistently ये आया कि पैसा कुछ हद तक, एक point तक gives आनंद जब तक आपकी basic needs fulfill होती, but then उस point के बाद पैसा has no impact on आनंद. पैसे का कोई भी impact happiness पे नहीं होता है beyond a particular point. So it results into happiness till basic needs are fulfilled. Basic needs, only basic needs की बात करते हैं. But then beyond a particular point, it has no impact. There may be very rich people but unhappy. There may be people who are not very rich, but then they are happy. So money has an impact, but to some point, to some extent, not that it is not directly proportional. ऐसा नहीं है कि पैसा जैसे जैसे बढ़ेगा आनंद भी आएगा, नहीं, ऐसा होता नहीं. This is what researchers say. In my opinion, based on the literature, जितना भी scientific literature available है, हम scientific literature की बात करते हैं, there are certain factors which have been identified very clearly, जो कि आनंद को या हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं या रिवर्स. फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन, जितना ही हम एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखते हैं जीवन से या दूसरों से, उतना ही हैप्पीनेस कम हो जाती है. सो एक्सपेक्ट लेस. स्टडीज शो हैप्पी पीपल वैल्यू कंटेंटमेंट. जो खुश या जो आनंदित व्यक्ति होता है, जो आनंद महसूस करते हैं लोग, they value contentment as their primary motivation. It is contentment that is more important. If you are satisfied, you are likely to be happy. Working towards realistic goals is sure to cultivate happiness, since you pursue that which brings you joy. This principle is espoused in author Locke Kelly's book. There is a book जिसका टाइटल है Shift into Freedom, the Science and Practice of Open-Hearted Awareness. It says that evidence shows that only 10% of our happiness is based on external successes. इस पुस्तक में ये बता रहे हैं कि जो आनंद है या जो हैप्पीनेस है, उसका सिर्फ उसको जो हमारे बाहर की जो दुनिया है, बाहर की जो सक्सेसेस है, सफलताएं हैं, जैसे मेरे पास एक कार के बजाय 4 कार है, एक फ्लैट की जगह तो 10 बंगले हैं, they contribute hardly 10%. हैप्पीनेस को सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल फैक्टर्स का होता है. अकॉर्डिंग टू किलिंग्सवर्थ एंड जिलबर्ट, as little as 4.6% of our happiness is derived from the specific activity that we are doing. To be happy, acknowledge what you have and cherish it. यानी कि जो है उसमें आनंदित रहिए, उसमें खुश रहिए. If we learn to do that, we are likely to sustain our happiness.
हमारे यहाँ जो आनंद है वो बरकरार बना रहेगा अगर हम जो हमने पाया है उसको अप्रिशिएट करें, उसको रिकॉग्नाइज करें। ये पहला है, एक्सपेक्ट लेस। दूसरी बात जो पाई गई है शोध के द्वारा वो है एंजॉय योर वर्क। जो भी काम आप करते हैं, वट एवर वर्क यू हैव चोजन टू डू, एंजॉय इट। हैप्पी पीपल एंजॉय देयर वर्क। ये पाया गया है जो खुश होते हैं यानी कि जो आनंदित महसूस करते हैं वो जो भी काम करते हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। They don't pursue it for the money or fame. But their goal ज्यादा पैसा नहीं है या मशहूर होना नहीं है. That is not the primary goal in their case. But for the satisfaction it brings. लेकिन जो उनको जो आनंद उसमें आता है, satisfaction आती है, वो primary goal है. Those stuck in an unfulfilled job that pays well soon find it not the way to happiness. कई केस में देखा गया है, they are getting very good salaries or they are earning very good amount, they are doing very good business. In their business they are doing very well, but then they may not be happy because वहां पे चाहत है और more, then go for more of what? More of wealth, more of money. But then, as I said in the beginning, money stops having any impact on happiness और आनंद पे उसका impact एक point के बाद खत्म हो जाता है. It is rewarding being remunerated for your skills. Money is just one aspect of job satisfaction. Pursue a job or career you enjoy. So enjoy करना, जो भी काम व्यक्ति करता है, कोई भी काम, जैसा हमारे कल्चर में, हमारे संस्कारों में तो कहा ही जाता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. जो भी काम व्यक्ति ने चूज किया है एज पर हिज क्वालिफिकेशंस, एज पर हिज बैकग्राउंड, उसको एंजॉय करना बहुत ही मीनिंगफुल है so far as happiness is concerned. Many people waste their best years making money. Many people keep on running after money for their families while putting their passion on hold. However, your happiness is a priority too. So happiness, जो भी करते हैं उसको enjoy करना is very, very important. This is the second factor which has been researched upon and reported. Third is live for today. आज के लिए जिए. Be happy with today. What you are doing today. What is the reality around you today. Live for it. कल किसने देखा? You don't know. So therefore, ज्यादा 20 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद, उसके बारे में ज्यादा, you can't live in future. You have to live in today. So avoid being fixated on your earlier failures. जो हो गया. कुछ failures past जीवन में रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए. जैसे कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे सिस्टम में जब होली आती है, होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है. होलिका दहन, उसमें हम कई सारी चीजें अर्पित करते हैं. क्या मतलब है इसका? जो भी तकलीफें हैं, जो फेलियर्स है, उनको आप दहन करिए and start living for today. So don't live with your failures. You draw lessons from failures and forget about those pains and look ahead and live for today. That is what is very important. You don't know what will happen next, let alone predict your next step. So what is the point of worrying? ऐसे हम सभी अपने जीवन में ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन कल दूसरे दिन या तीसरे दिन पता लगता है या तो उनको हार्ट अटैक हो गया, इस पास्ट हो. ऐसा कई बार होता है. सो ज्यादा दूर का में आप फ्यूचर में, यू कांट लिव इन द प्रेजेंट. Live in the present moment and enjoy it while you can. There is much to be gained with your focus on the present moment. जो अभी है उसको जिए. Such as taking in the beauty of life and reduced stress. The acclaimed Buddhist actor, एक famous actor है, Buddhist actor, Buddhist author, Ezra Beida.
She affirms this idea in the book, The Authentic Life, Zen Wisdom for Living Free from Complacency and Fear. In short, happiness doesn't come from making happiness the goal. It comes from being able to appreciate the journey, particularly the present moment experience of our life. जैसा कहा जाता है जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा का आनंद लीजिए आप. Be happy while you are traveling. So जब ये जर्नी में, और उसमें भी प्रेजेंट, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन से जो दिख रहा है जिस टाइम, उसको एंजॉय करें, उस नेचर को एंजॉय करें, उस ग्रीनरी को एंजॉय करें. सो लिव फॉर टुडे. चौथा पॉइंट जो रिसर्च में शोध के द्वारा पाया गया है, दैट इज चूज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस को चूज करिए, हैप्पीनेस आपको चूज नहीं करेगी. सो वी हैव टू चूज द हैप्पीनेस. स्टेप अवे to establish your goals and maintain a flexible approach. This requires an open mind and positive thinking. Choose happiness as your primary goal instead of allowing other competing areas to overshadow it. You are not defined by one perspective and can choose a positive attitude in any moment. You can accept failure, which does little to help you move towards happiness or develop a positive outlook. So we have to choose the happiness. अगर हम आनंद को चूज करेंगे, आनंद पे ध्यान देंगे, तो आनंद पाएंगे. अगर आनंद को हम ये सोच के चलेंगे कि आनंद हमको ढूंढ के लाएगा, आनंद नहीं आएगा. So आनंद को खुद को चूज करना, no matter your choice. There will be another day to reveal your best self, since conditions are continually changing. हमारा environment, हमारी situation ever changing. Things keep on changing, which is inevitable. अब चाहे न चाहे change तो होगा ही, परिवर्तन तो होगा ही होगा. And hence embrace change with an open mind. जो हो रहा है होने दे, जो चल रहा है चलने दे, for good. जहां हम अच्छाई की तरफ कोई भी बात मोड़ सकते हो मोड़े, but we should keep our mind open, and life will unfold better than you imagine. Real happiness comes not when you choose to be happy, but when you discover the things that will make you happy. So simply एक कोने में बैठेंगे और सोचेंगे बस मैं हैप्पी रहूंगा और आनंद आएगा, ऐसा नहीं होगा. So you have to choose those things which can make you happy, and then keep on doing them. So this is what Jonathan Fields has reported. पांचवी बात है be social. इसे जैसा हम जानते हैं, human beings basically social animal, gregarious in nature. So be social. Humans are social creatures, ऐसा कहा जाता है साइंस में. हमारे प्रोफेसर गुरुप्रसाद का जो फील्ड है लाइफ साइंसेस में, कहते हैं ये humans are social creatures. It is wired into our DNA. हमारे DNA में to connect with others, ये बसा हुआ है. By nature, human beings are like that. A region of the brain called mirror neurons allow us to recognize and mirror the behavior of other people. जैसे कहते हैं ना, दूसरे के देख के रंग पकड़ना. That is why yawning is contagious, because scientists believe it is a sign of unconscious social bonding. That's why कई बार क्या मिररिंग होती है. कई बार क्या होता है, अगर किसी ने यॉर्निंग की जमाई ले ली तो बार बार ले रहा है, तो दूसरा उसके साथ जो बैठा वो भी करने लगता है. It mirroring happens. So we tend to reflect what we are imbibing. Happiness and love flourish in the company of others and are important for your health and well-being. So that's why I would like to compliment our organizing team headed by Dr. T.K. Mandal, that they have chosen health. Why? Because happiness and love flourish in the company of others and are important for your health and well-being. So ये जुड़े हैं. Health and happiness, there is a connect. ऐसा नहीं कि connection नहीं है. There is a connect. So hope, health and happiness, there is a connect.
अब अभी तक कोविड से हम सभी लोगों ने अनुभव किया, अभी भी कोविड है, लेकिन then at the same time there is a great hope. जैसे वैक्सीनेशन अनाउंस हुआ लास्ट ईयर, there was a hope that okay, we have a chance to live more, live longer, because vaccination has been invented. So if you isolate yourself, negative emotions are likely to arise. अगर हम एक कोने में बंद, एक कमरे में बंद बैठे रहेंगे तो नेगेटिविटी आने की संभावना रहती है. इसीलिए सोशल होना, having connect with others is important. In this time of technological connectedness, and that's what we have seen, COVID के time में all of us remain connected because of technology. People are more isolated and lonely than ever, giving rise to mental health issues that we have seen during COVID. But at the same time, technological connectedness is also important. It has come to our rescue. Cherish those important to you via regular social contact. For example, studies show that married people are happier than single people. कई ऐसे researches report हुई है जहाँ पे ये पाया गया कि जो married लोग होते हैं, विवाहित लोग होते हैं, they are happier than the single people. So जो जैसे कहते हैं कि फल जो खा रहे हैं वो खुश है, अब जो ने खाया ही नहीं वो तो ज्यादा दुखी है, काश हमने भी खाया होता. So married people are happier than the single ones. This highlights that close connections are vital to your overall emotional wellness. Happiness is not something ready-made. Yeah, ready-made thing. It comes from your own actions. That's what Dalai Lama says. It comes from one's own actions. आप क्या करते हो? जैसे हमारा जो श्री वैष्णव ट्रस्ट है, 138 years से निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं since last 138 years. That means we are getting connected to people. For what? It gives us happiness. We are not getting any money in return. In fact, जो हम पैसा हमारा ट्रस्ट खर्चता है, लोगों की निशुल्क डायलिसिस करते हैं या इस तरह के कई सारे काम करते हैं, कई बच्चों को बुक्स देते हैं फ्री. It gives happiness. So action, जो behavior, जो कुछ भी हम करते हैं, that's where we draw our happiness और वो आनंद उन एक्शन से आता है. Sixth point is don't compare yourself to others. हमारे आदत में कई बार होता है कि हम खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ. जैसे भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे हो गई, चिंता शुरू. अरे भाई, don't compare. Yes, make things better, of course, but then comparison will give you dukh, तकलीफ. So आनंद तब रहता है जब हम कंपेयर नहीं कहते हैं, हम ये क्वेश्चन नहीं करते इसके पास क्यों है और मेरे पास नहीं है. Don't go into that. That will give you unhappiness. Then seventh and the last, seventh one is stop worrying. चिंता करना छोड़े. It must come in our habit not to worry. क्योंकि ऐसा तो कहते ही है, चिंता टू चिता. चिंता जो करता है वो अल्टीमेटली टेंशन की चिता होनी, वो करते ही रहेगा, हैबिट में आएगा उसके, आदत. So we need to improve our habits and learn stop worrying. ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखना सीखना जरूरी है. We need to trust in God and stop worrying. जो होगा अच्छा ही होगा, but at the same time अपनी तरफ से whatever best we can do, we should do. And lastly and finally, I don't want to stand between our speakers and all those who have joined. Last is to develop a positive outlook. एक सकारात्मक सोच. A positive outlook is very important. That's what we should keep. Without a positive outlook, there is a little happiness to circulate in our lives. To follow the advice mentioned by so many researchers, develop an optimistic attitude. It requires work and frequent attention, but the rewards are worth it. As I have seen from my life, everything happens for our highest good, even if we are unaware of it. कई बार हम पाते हैं, अरे यार जो हुआ अच्छा ही हुआ,
अच्छा ही हुआ. That means some planning is going somewhere. So trust in God. Things happen for good. But at the same time, उसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो. Whatever best we can do, whatever we can do, we should do. Have you recently been, say, in many cases, जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ, if a person is fired from a job, उसको नौकरी चली गई, maybe an exciting career awaits you beyond your current job. ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी कई बार है. एक जॉब चली गई और बाद में पता लगता है कि जो दूसरी जॉब मिली, that is much better than what he was or she was doing earlier. Many times it has been the spiritual author and teacher Shanti touches on this principle in his book Falling into Grace. Most of us don't want to be bothered. We don't want our search for happiness to have any difficulty in it. What we really want to be given is happiness on a platter. Plate में happiness आ जाए, वो होगा नहीं, वो होता नहीं है. But to find what true happiness is, we must actually be willing to be disturbed, surprised, wrong in our assumptions, and cast into a very deep well of unknowing. So I conclude that, which sums up to this entire what I have said so far, there is no way to become happy. ऐसा नहीं कि कोई specific जैसे सेरोडोन ले लो सर दर्द ठीक हो जाएगा, इस तरह से नहीं है. We simply need to stop doing the things that make us unhappy. अगर हम ये सीखे कि क्या नहीं करना चाहिए, which results into unhappiness, happiness will automatically emerge. तो कोई specific दवाई नहीं है. Simply we need to learn. Stop worrying. जो मैंने ये 8 points बताए, if we can follow them, that expect less, expectations कम करें, enjoy work, जो भी काम हम करते हैं उसको enjoy करें, live for today, आज में जिए, choose happiness. Happiness खुद नहीं आएगी, हमको ऐसे activities करनी चाहिए, ऐसे actions करनी, जैसे charitable activities, that will give you happiness. Be social, get connected to others. दूसरों से जुड़िए, दूसरों की जो भी मदद हम कर सकते करना चाहिए. Don't compare yourself with others. दूसरों के साथ खुद को compare न करें, वो दुख देगा. बल्कि ये देखिए कि how can things made be better for everyone. And stop worrying. We need to learn to stop worrying. And finally, have a positive outlook in life. These are some of the points which have emerged in recent research. And I'm sure that this conference, which is the 4th Anand-Amrit, organized by our Center of Excellence in Happiness Studies, will be an enriching experience for all of us, and we will be happier by the time this conference gets over. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are only halfway through the inaugural and there are great takeaways. Your precious words of wisdom, they will stay with us forever, sir. Thank you. The Vaishnav Group of Institutions has a proud history of the past 138 years. To know more about Sri Vaishnav Group of Institutions, may I now request Sri Purushottam Das Ji Pasari, Honorable Chancellor, Sri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya, to share with us the rich heritage of Sri Vaishnav Group of Institutions. Sir, please. नमस्कार. आज की हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश अर्गल जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान भोपाल, कमल नारायण बुराड़िया, सचिव श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट, डॉक्टर उपेंद्र जी धर, कुलपति श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास के समस्त ट्रस्टीगण, विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन हैप्पीनेस स्टडीज के समन्वयक डॉक्टर टी.के. मंडल, प्लेनरी सेशन के समस्त वक्तागण, सभी उपस्थित अतिथिगण, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, शिक्षकगण, शोधार्थी एवं प्रिय विद्यार्थी, आनंद-अमृत 2022 के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है. विशेष रूप से हमारे आज के अतिथि श्री अखिलेश आर्गल जी का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर
हमें गौरवान्वित किया है। आनंद एक ऐसा विषय है जिसे हर इंसान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बहुत कम व्यक्ति इसे पाने में सक्षम हो पाते हैं। जितना सरल इसे परिभाषित करना है, उतना ही मुश्किल इसे प्राप्त करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अक्सर इसे लोगों और चीजों के साथ जोड़ते हैं। आनंद ऐसी चीज है जो आपके साथ शुरू होती है और आपके साथ ही समाप्त होती है। केवल जो लोग यह महसूस करते हैं वे ही सच्चे आनंद को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। अरस्तु एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने आनंद के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उनका मानना था कि आनंद हमारे अपने स्वयं पर निर्भर करता है। उसके अनुसार आनंद मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा था कि आनंद अपने आप में एक लक्ष्य है और वह पुण्य पर निर्भर करता है। हालांकि अरस्तु के नैतिक गुण सामान्यतः सामाजिक गुणों की वजह व्यक्तिगत अधिक है। अरस्तु के अनुसार वास्तव में एक सुखी जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना जैसी कई स्थितियों की पूर्ति की जरूरत है। उन्होंने अपने सबसे प्रभावशाली कार्य निकोमेकियन एथिक्स में आनंद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अरस्तु का यह सिद्धांत आज के परिदृश्य में भी प्रासंगिकता रखता है। उनके अनुसार सभी जरूरतों को पूरा करना ही आनंद का अंत है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी चीजें, अच्छे रिश्ते, पैसा, सफलता या शक्ति हम चाहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमें आनंदित कर देंगे। ये कहना सही होगा कि बाकी सब कुछ सिर्फ आनंद को प्राप्त करने का एक साधन है और आनंद अपने आप में सभी का अंत है। आप सभी को यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को विविध विधाओं में उच्च शिक्षा के माध्यम से पूर्ण करने की ओर लगातार प्रयासरत है तथा स्थापना के अल्प समय में ही यह विश्वविद्यालय प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर उन्नतिशील संस्थान के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफल रहा है। विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, अनुभवी प्राध्यापक, सर्व सुविधा युक्त प्रयोगशालाएं एवं अध्ययन तथा अध्यापन हेतु अनुकूल वातावरण छात्र छात्राओं को उपलब्ध है। बंधुओं, श्री वैष्णव ट्रस्ट एवं इसकी सहयोगी संस्थाओं ने गत 138 वर्षों से इंदौर शहर में नर सेवा, नारायण सेवा मंत्र को आधार मानकर जन सेवा एवं जन कल्याण के अनेक प्रकल्प संचालित किए हैं। वर्ष 1884 में इंदौर के वस्त्र व्यवसायियों ने स्वयं के व्यवसाय पर शैक्षिक टैक्स लगाकर श्री वैष्णव सहायक कपड़ा मार्केट कमेटी की स्थापना की थी। इसका मूल उद्देश्य उस समय असहाय बंधुओं तथा जरूरतमंद नागरिकों की सहायता करना, पशु पक्षियों की आहार देना और साधु संतों की सेवा करना था। सभी पूर्ववर्ती संस्थापकों की दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप संस्था द्वारा 1925 में श्री वैष्णव अन्न क्षेत्र एवं श्री रामकृष्ण बाग और 1934 में श्री वैष्णव आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की। यह औषधालय विगत 87 वर्षों से आज भी संचालित है एवं अब इसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक पद्धति से मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। 2015 में ट्रस्ट द्वारा 2 डायलिसिस सेंटर इंदौर में स्थापित किए गए, जिसमें 400 रुपए में डायलिसिस किया जाता है, जबकि 1200 रुपए उसकी लागत आती है। करीब प्रति माह 1000 डायलिसिस संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। अभी इसी वर्ष से शंकर नेत्रालय के सहयोग से ट्रस्ट द्वारा लगातार मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। सन 1951 से ट्रस्ट द्वारा शैक्षणिक कार्य के अंदर प्रथम श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव हायर स्कूल की स्थापना की गई। यह विद्यालय स्थापित होना श्री वैष्णव ट्रस्ट के इतिहास में टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। आज ट्रस्ट द्वारा 4 सीबीएसई स्कूल, 5 महाविद्यालय के बाद में 2015 से श्री वैष्णव विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ किया गया। सभी संस्थाओं में 23,000 से अधिक विद्यार्थी आज अध्ययनरत हैं। उल्लेखनीय है कि न लाभ न हानि के आधार पर ये सभी संचालित संस्थाएं अपनी प्रतिष्ठा से संपूर्ण देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रही है। मैं ये मानता हूं कि ये सब कार्य करने में हमारे वैष्णव कमेटी के सभी सदस्यों को निश्चित ही आनंद प्राप्त होता है, जब भी वे लगातार ये कार्य करने और कार्य को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सभी शासकीय औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात 2015 में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना मानवता के बेहतर भविष्य के उत्थान को
उत्कृष्ट शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सुलभ करने की दृष्टि से की गई है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसा उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है जिससे कि बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रेरणा मिल सके एवं मूल्य आधारित नेतृत्व की क्षमता को पोषित किया जा सके। विश्वविद्यालय हमेशा सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के विकास एवं वैश्विक समाज के विकास की ओर प्रयासरत है। मैं पुनः आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय इसी प्रकार विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता रहेगा एवं शिक्षा के साथ साथ छात्रों की बहुमुखी प्रतिभाओं को भी उचित अवसर प्रदान करने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों को हासिल करते हुए देश के भविष्य की नींव सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान लगातार देता रहेगा। पुनः आनंद-अमृत 2022 में आप सभी का स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Release of souvenir is a moment of pride for organizers in any conference. It is the result of the hard work of the contributors and of course the organizing team members. May I now request Honorable Chief Guest on the occasion, Shri Akhilesh Argal, to release the souvenir of Anand-Amrit 2022, Sar Anand 2022. I request the AV, the technical team to please play the AV. These were a few glimpses of the souvenir. The complete souvenir features 17 selected abstracts, out of which we have shared only a few initial pages for this inaugural ceremony. Let's have a big round of applause for all the contributors. Thank you, sir. Whoever is happy has the capacity to make others happy. Today, we are indeed privileged to have with us Shri Akhilesh Argal, the Chief Executive Officer of Raj Anand Sansthan himself. Before inviting Shri Akhilesh Argal, I have the pleasure to share his introduction with the audience. Shri Argal has obtained BE Civil Engineering and AIG NFA, which is equivalent diploma to MSc Forestry, MA in Public Administration as well. He has been Indian Forest Service Officer of 1986 batch, MP cadre, and is now retired from that position. Presently, he is working as Chief Executive Officer, Raj Anand Sansthan. He has field experience as Divisional Forest Officer, Forest Department, and Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Rural Development Department as well. He has research experience as Head, Agroforestry Division at Tropical Forest Research Institute, which is a regional institute of Indian Council of Forestry, Research and Education, Jabalpur. He has served as Additional Secretary, Government of MP, General Administration Department, and Tribal Welfare Department as well. And he has been associated with a number of good governance initiatives like Samadhan Online, Samadhan Ek Din Mein, Lok Kalyan Shivir, Lok Seva Kendra, etc. And in implementation of some of the most important enactments like Right to Information Act in 2005, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006, Lok Sevaon ke Pradhan ki Guarantee Adhiniyam 2010, and he played a key role in setting up of School of Good Governance and Policy Analysis at Bhopal, now known as Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, which is an autonomous institute of the government of MP and second of its kind in the country. He has served as director of this institute for 10 years before joining the current assignment. Now, I have the honor to invite Shri Akhilesh Argal to enlighten us with his words of wisdom.
Thank you, Dr. Anu. Namaskar. Respected plenary speakers, panelists, Chancellor Sri Purushottam Das ji, Vice Chancellor Dr. Dhar, Trustees of Sri Vaishnav Vidyapeeth, Secretary Dr. Kamal Narayan ji, ladies and gentlemen, it's my privilege to be part of this Anand-Amrit 2022. And I am thankful to Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya for inviting me to this Anand-Amrit. And I am particularly thankful to Dr. Dhar and Dr. T.K. Mandal for giving me this opportunity to share my thoughts with all of you. Friends, first I would like to congratulate the organizers for choosing such a relevant topic after COVID-19 pandemic. But at the same time, I will clarify that I am not an expert on the subject. मैं जो भी बात करूंगा वो मेरी जो समझ है इस विषय पर, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर करूंगा, और बहुत सारी बातें शायद साइंटिफिक रिसर्च के विपरीत भी जा सकती है, क्योंकि मैं अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं. I will not involve myself in discussing what is hope or what is happiness. But one thing I can say from my own experience, that a greater sense of hope is associated with better physical health and higher psychological and social well-being. जैसा अभी डॉक्टर धर कह रहे थे कि कोविड के समय में होप ने हमको, शायद वैक्सीनेशन की होप ने हमको एक आस दिलाई कि हम जीवित बचेंगे. And definitely hope can help us to manage stress and anxiety, and at the same time we can cope up with the adversity. And it has been proved during the last 2 years that we have survived the most adverse condition during the second wave of the COVID. And definitely hope contributes to our happiness and motivates the positive action. And all these personal experience of ours are definitely supported by whole body of research also. There is a lot of research going on during the last 3 decades with the birth of positive psychology. And similarly, with my experience, I can say that there is positive correlation between happiness, health, and performance also. And it is also supported by a lot of studies. One study says that happy people are 12% more productive than the normal people. At the same time, it says that unhappy people are 10% less productive than the normal people. So ultimately, happy people is 22% more productive than an unhappy people. Other research says that happy people take less sick leave. They have quantified the number also, that happy people take 15 days less sick leave than unhappy people. The research proves that happy people are more creative. They are very good team leader. They are very good team member also. They focus on solving the problem. They do not complain for the problems. And this shows that every organization should have happy people and happy environment for that matter.
I will not go into the discussion whether hope leads to happiness or happiness leads to health and healthy body and mind. But one thing is sure, every one of us wants to live a happy life. हम में से सभी लोग एक आनंदित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन अहम प्रश्न यही है कि आनंदित जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। अभी डॉक्टर धर ने कुछ 7-8 पॉइंट्स बताए थे कि आनंदित जीवन जीने के लिए अगर हम इन बिंदुओं पर फोकस करते हैं तो शायद हम एक आनंदित जीवन जी सकते हैं। वास्तव में वी एट राज आनंद संस्थान do not also guide people. We give only direction that how we can lead a happy life. And if we proceed in that direction, definitely we will progress in leading a happy life. And to proceed in that direction, we require some self-exploration. Without self-exploration, probably we cannot live a happy life. And with self-exploration, we must have clarity on 3 points. First, what I want to achieve in my life. Second, what is prosperity? And third, consciousness. To be aware, who am I? Well, let's try to explore first point, what I want to achieve in life. Probably everybody will be able to answer this question very easily. And the answer may be, I want a big car, I want a big house, I want lot of money, I want a happy family, I want success in career, and so many things. But if I ask next question, why you want to achieve all this? Probably we may not be able to answer so quickly. We may not be able to respond so quickly. But a little exploration will show that ultimately we want to live a happy life. We want to be happy and prosperous. We want to live peacefully. And we want continuity of happiness also. It is not like that we are happy today and we will be satisfied. We will need continuity of it. Now the real question is, if happiness and prosperity is our goal, why we are not directly focusing on it? डॉक्टर धर ने भी यही प्रश्न उठाया था, मैं भी इसी प्रश्न को पुनः दोहरा रहा हूं कि अगर happiness and prosperity is our goal, ultimate goal, why we are focusing on this? And when we focus on intermediate goal, probably we miss our ultimate goal. And this is the first fundamental mistake which we commit, and that's why we remain unhappy. We presume that accumulation of fiscal facilities and success in career will ultimately result in happiness and prosperity. And with this presumption, we put all our efforts on accumulating the fiscal facility. But it does not lead to continuity of happiness. So this is the first fundamental mistake which we are committing. And the second fundamental mistake we commit is not having clarity about what is fiscal facility and what is prosperity.
we presume prosperity to be the accumulation of physical facility, which is not the case. When we are able to see that we are having more than the adequate facility, then only we can feel prosperous. Thus, prosperity is a feeling of abundance. It is a feeling that I am having sufficient to meet our basic needs. And we can visualize that to become prosperous, there are two basic requirements. First, we should have right assessment of our required physical facility. And secondly, we should ensure the requirement of our needs, our genuine needs. And this will require right understanding. If we do not know how much physical facility we require, we will not be satisfied. Dr. Dhar was pointing out that we should have satisfaction what we are having. But how that satisfaction will come? That satisfaction will come only when we will realize, when we will have right understanding, when we will realize with the right understanding that we are having sufficient to meet our needs. But we do not realize it. And we keep on increasing our accumulation of physical facility. And when we feel deprived, we think of depriving others. जब हम लोग को यह महसूस होता है कि हमारे पास कम है, तो निश्चित तौर पर हम दूसरों के हिस्से का वह छीन कर उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। और इस तरह से न केवल हम स्वयं दुखी होते रहते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। और अगर हम अपने आसपास नजर डालें, then only we will see two type of people. Those who are lacking physical facility, and they are feeling deprived and they are unhappy. But there is one more category, those who are having all the physical facility, but still they are feeling deprived and they are still unhappy. और इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे आसपास उन लोगों की तादाद, उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो सब कुछ होने के बावजूद भी अपने को डिप्राइव्ड और दुखी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने साथियों से थोड़ा सा चिंतन करने के लिए अनुरोध करूंगा कि हम लोग थोड़ा सा अपने साथ समय बिताकर देखें कि हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या हम लोग पहली कैटेगरी में आ रहे हैं या दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, या हम लोग एक तीसरी कैटेगरी में जा रहे हैं जिसकी मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं की है, जिनकी संख्या बहुत सीमित है, बहुत कम है। And third fundamental mistake which we commit is that we never explore who am I. हम कौन हैं, हम कभी इस प्रश्न पर चिंतन नहीं करते हैं। We consider ourselves as a body alone. क्या हम सिर्फ शरीर हैं या उससे कुछ ज्यादा है? मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, if we explore a little bit, we can understand who am I. We keep saying that I am happy, I feel bored, I like this music. Who is this I? यह मैं कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं? जब मैं यह प्रश्न कर रहा हूं तो यह प्रश्न आपके अंदर जो विचार पैदा कर रहा है वह कौन है? क्या शरीर है? मेरे ख्याल से जिस मैं को मैं रिफर कर रहा हूं
यह self है, it is not the body. And self is the one which recognizes the relationship. It is the one who decides what to do to feel happy or sad. Thus, human being is a coexistence of body and self. And a little further exploration will show that the needs of the body and the needs of the self are different. If we look at the needs of the body, it is only physical facility. And they can be food, shelter, clothes, etc. And we will see that needs of the physical facility, they are quantitative in nature. We can easily identify the quantity we need, whether it is food or clothes or whatever it may be. And we can also see that we require all these facility, physical facility in very limited quantity. And this is very important point to be noted. डॉक्टर धर ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि हमारे पास क्या है, जो आज है, क्या हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं? हम शायद जो है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हम और की लालसा में, और की चाहत में लगातार उस दिशा में परेशान। लेकिन जिस सेल्फ की मैंने बात करी, उसकी जरूरतें क्या है? क्या हमने इस पर कभी विचार किया? The need of the self is feelings. If someone expresses respect for us, we feel happy about it. Respect is one of the basic need of self. And we see that need of the self is continuous. ऐसा नहीं है कि आज हमारे कोई रिस्पेक्ट कर दे तो हम खुश हो जाएंगे और उसके बाद खुश बने रहेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप रोज घूमने जाते हैं, आपका कोई मित्र या सबऑर्डिनेट मिलता है और आपको रोज विश करता है, और एक दिन वह विश करना भूल जाता है, उस दिन आपको कैसा लगेगा? The moment you see that he has not wished you, हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा। आज क्या हो गया? उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? लगता है वह कल की बात पर या 15 दिन पहले की बात पर नाराज है और इस कारण आज उसने मुझे विश करना। और इस तरीके से हम उस जरा से एक्शन के कारण पूरा का पूरा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी रिस्पेक्ट की या हमारी जो सेल्फ के रिक्वायरमेंट हैं वो लगातार हैं, वे लगातार चलते रहने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, all these feelings are qualitative in nature. The need of the body is quantitative in nature, but the need of the self is qualitative in nature. We cannot talk quantity of respect. We can only see whether the feeling of respect is there or it is not there. Thus, we can clearly see that the need of the body and the need of the self are different, and both are to be fulfilled if we want to be happy. We cannot replace one by the other. But what we are doing today? We are only focusing on the need of the body. We are not focusing on the need of the self. And the need of the self is relationship. And the foundation of relationship is feelings. But due to not having right understanding, we are trying to fulfill needs of the self by physical facility.
और आपने देखा होगा प्रतिदिन हम इस तरह के एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, वे हमारे साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, हमारी अटेंशन चाहते हैं, हमारा प्यार चाहते हैं, लेकिन हम उसकी पूर्ति फिजिकल फैसिलिटीज से करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने बच्चों की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, वे चाहते हैं कि हम उनके साथ थोड़ा सा खेलें, हम उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, लेकिन हम उस जरूरत को, उस अटेंशन की जरूरत को खिलौनों से और दूसरे साधनों से, खाने से, टॉफी से पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे संबंधों में वह प्रगाढ़ता नहीं आ पाती है, हम दुखी महसूस करते हैं, चाहे वे हमारे बच्चे हों, चाहे वे हमारे पेरेंट्स हों। And this is another fundamental mistake which we are committing every day. And we are mistaken that this unhappiness in the family is due to physical facility, lack of physical facility. And we put more effort for earning the physical facility. And this further aggravates the situation because we are giving less time again for the relationship because we are putting more time for earning the physical facility. And this is a vicious circle. And unless we develop right understanding, we cannot come out of this. We have to develop right understanding for coming out of this circle. Another challenge is that we have our own experiences, conditioning, assumptions right from the childhood. And this leads to development of ego, जिसको हम अहम कहते हैं। और ये किसी भी चीज का हो सकता है, हमारे कार का हो सकता है, हमारे अचीवमेंट्स का हो सकता है, हमारे बच्चों का हो सकता है, हमारी पोजीशन का हो सकता है। And the size of this ego is also not fixed. It varies with the situation. बॉस अगर हमारा सामने आ जाए तो हमारी ईगो छोटी हो जाएगी, सबऑर्डिनेट हमारा सामने आ जाए तो हमारी ईगो बड़ी हो जाएगी। और इसका सल्यूशन सिर्फ यह है कि जब हम सेल्फ को रियलाइज करते हैं, जब हम अपने साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं, एंड दिस सेल्फ और कॉन्शियसनेस इज entirely in opposite with the ego. Once we develop consciousness, we have unlimited energy of, and this self or consciousness, it cannot be disturbed by others. यदि हम अवेयर हैं तो फिर हमारे सबऑर्डिनेट ने हमको विश किया या हमारे साथी ने हमको विश किया, वो छोटी सी घटना शायद हमको प्रभावित नहीं करे, क्योंकि हम फिर रियलाइज कर पाएंगे कि शायद उसने ध्यान ही नहीं दिया होगा, मुझे देखा ही नहीं होगा, वह किसी और मुसीबत में होगा। And once we start seeing the reality, the life changes. We will realize that happiness is in harmony. डॉक्टर धर ने कहा था कि जब हम हमारे कहने, हमारे सोचने, हमारे करने में जब हार्मनी होती है, तब हम खुशी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही। जब तक हमारी कथनी करनी में अंतर है, हम कितनी भी फिजिकल फैसिलिटी एक्युमुलेट कर लें, हम आनंदित नहीं हो सकते हैं। And once we start seeing this reality, we will stop changing people, we will stop changing circumstances, we will stop changing the places. अभी हम क्या करते हैं? हमको लगता है सामने वाले में कमी है और हम सामने वाले को सुधारने का प्रयास करते हैं, और सामने वाला भी यही सोच रहा है कि सामने वाला गड़बड़ है और वह हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस प्रकार हम एक दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी नहीं सुधरता है और हमारे रिलेशनशिप लगातार बिगड़ते चले जाते हैं। We at Raj Anand Sansthan, through our various programs and particularly Al Viram program, try to sensitize people and provide them some tool for self-introspection and to develop right understanding. And once we start spending some time with us, the life starts changing. Thus, key to happiness is developing right understanding, living a conscious life, and with right understanding, we can clearly justify, we can clearly do justice to our relationship, and at the same time, we will understand what is prosperity. And definitely with this, we can lead a happy and prosperous life. So I think living a awarenessful, conscious life will definitely lead to happiness, and we are only trying in this direction to sensitize people on this issue. I am thankful to Sri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya for giving me this opportunity and allowing me to share my thoughts on the subject. They may not be very rational, but that is my own experience, and there may be some thoughts also when we do some research. Thank you very much for patient hearing. Namaskar. Thank you, sir, for sharing your experiences, your thoughts. And I'm sure Rajya Anand Sansthan is already working very well in this area and will continue to see greater horizons. Now, I would like to request Sri Kamal Narayanji Buradia, Honorary Secretary, Sri Vaishnav Vidyapit Trust, to please propose the words of thanks. सर आपका म्यूट है। आज के हमारे कार्यक्रम आनंद अमृत के मुख्य अतिथि अखिलेश अर्गल जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राज्य आनंद संस्थान, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी, कुलपति डॉक्टर उपेंद्र धर जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर टी.के. मंडल, वैष्णव ट्रस्ट समूह के समस्त सम्माननीय ट्रस्टीगण, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर, विभागाध्यक्ष, फैकल्टीज, रिसोर्स पर्सन्स, एमिनेंट स्पीकर्स एंड प्लेनरी सेशन एवं प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम आज के हमारे कार्यक्रम आनंद अमृत 2022 के माननीय मुख्य अतिथि अखिलेश अर्गल जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राज्य आनंद संस्थान का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनकी गरिमा में उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित और आज आनंदित महसूस कर रहे हैं। आज उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ हमें सहज रूप से प्राप्त हुआ है। ऐसे कर्मवीर प्रशासकीय अधिकारी का सानिध्य हमें मिला है, हम खुश नसीब हैं। सर, मैं आपके लिए यही कहूंगा कि यह कार्यक्रम रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष, आनंद और खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को मुस्कुराहट मिली। अनुग्रहित हैं, हम आभारी हैं। आपके आने से आज हमें आनंद अमृत के उस उत्सव में आनंद का एहसास हुआ और खुशियां मिली। खुशियां जिंदगी में हर कोई खुश होना चाहता है। हम अपने अधिकांश कार्य खुशी प्राप्त करने के खातिर करते हैं। खुशी पाना इंसान के जीवन का
सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। कभी कभी हमें कोई दुख भी झेलते हैं तो खुशी की आशा और खुशी के पाने की खातिर। एक प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है सर कि क्या इंसान की खुशी को नापा जा सकता है? खुशी का विज्ञान कहता है कि खुशी को व्यक्ति की देह भाषा से पढ़ा जा सकता है। खुशनुमा एवं प्रसन्नचित्त लोग किसी भी सामान्य व्यक्ति से अधिक मुस्कुराते हैं। व्यक्ति की देह भाषा से भी खुशी झलकती है। जब खुशी को देखा जा सकता है तो खुशी को पाया भी जा सकता है और खुशी को नापा भी जा सकता है। जीवन शैली में थोड़े परिवर्तन से खुशी पाई जा सकती है। हमारी सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक नजर खुशी को सतत बनाए रख सकती है। खुश रहना एक अभ्यास की बात है, अतः स्वयं को प्रशिक्षित करने से बढ़िया कुछ नहीं है। ये बात हमारे अक्सर सुनी जाती है, मेरी वेतन वृद्धि हो जाएगी, कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा या कोई अच्छा व्यापार चालू हो जाएगा आदि, तो मुझे फिर खुशी मिल जाएगी। और हम में से अधिकांश तो लोग खुश होने के लिए विशेष मौके का इंतजार करते हैं। ऐसा करके हम खुशी को विलंबित करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्यों नहीं हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर उस खुशी हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ यात्रा का, जैसे सर ने बताया, पूरी यात्रा का आनंद लिया जाए और लक्ष्य तक पहुंचने को खुशी को स्थगित न किया जाकर लक्ष्य के साथ साथ खुशी को भी साथ में चलाया जाए। हमें अपनी खुशी खुद चुनने की शक्ति का अभ्यास करना होगा और हर छोटे छोटे पलों में खुशी को ढूंढना होगा। अपने खुशी के लिए दूसरों पर यदि हम निर्भरता कम कर देंगे और स्वयं को खुश करने की जिम्मेदारी लेंगे, यदि हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस हमारे हाथों में है, क्योंकि इस संसार में दुख और तनाव के 3 प्रमुख कारण है, ऐसा मानना है, जो हमारी खुशी में बाधक है। काश ऐसा हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ और ऐसा ही क्यों हुआ? क्या हम इससे उभर सकते हैं? और इसका एक ही उत्तर है कि जीने का तुम ये अंदाज रखो, जीने का तुम ये अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझ सके उसे नजरअंदाज रखो। जीने का तुम ये अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझ सके उसे नजरअंदाज करो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो तो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तो तुम उसके अंदाज से खुश रहो, और जो लौट कर नहीं आने वाले हैं उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किया किस लिए, दूसरों के मुस्कान में भी खुश रहो। क्योंकि बाहर है आदमी की समझ से ये खुदा के खेल, क्योंकि बाहर है आदमी की समझ से ये खुदा के खेल। कोई चिराग न जान पाया हवा आज तक हवा के खेल, कोई चिराग न जान पाया आज तक हवा के खेल। ये जिंदगी के खेल तो लाजिम में खेलना, ये जिंदगी के खेल तो है लाजिम में खेलना। आज अब मुस्कुरा के खेल या आंसू बहा के खेल, अब मुस्कुरा के खेल या आंसू बहा के खेल। सर, मैं पुनः आज हमारे जितने भी वक्तागण आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे जो कुलाधिपति श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी और हमारे कुलपति श्री उपेंद्र धर जी का भी इतना अच्छे प्रोग्राम के आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो आज की जो आयोजन समिति है, डॉक्टर टी.के. मंडल और जो आज मास्टर ऑफ सेरेमनी है अनु उकंडे, उनने भी बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम प्रस्तुत किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं पुनः आपका सर आभार मानता हूं, आपने आज व्यस्त समय से हमको समय दिया। आपका सर इकबाल और बुलंद हो। हमारा विश्वविद्यालय परिवार ये मंगल कामना करता है, आप स्वस्थ रहें, शतायु हों एवं देश प्रदेश की और समाज की इसी प्रकार सेवा करते रहें। और हम चाहते हैं सर, जब आप इंदौर पधारें तो हमारे विश्वविद्यालय में भी एक बार आप अवश्य आएं, जब वर्चुअल मीटिंगें खत्म होकर, और हम आपका चाहेंगे कि हमारे एक्सीलेंस जो हमने सेंटर बनाया है उसमें कुछ आप सुझाव दें और उसको हम सरकार के साथ और अच्छा कुछ काम कर सकें, क्योंकि हमारी ट्रस्ट दिन भर सेवा कार्यों के साथ हमारी हम ये 5th जनरेशन है सर, जो कि ऑनरेरी इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में हमारा पूरा कार्य कर रहे हैं। और इसको हम चाहते हैं कि आपका भी और सानिध्य मिले तो हम इसमें और भी कुछ आगे कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस इतने अच्छे प्रोग्राम को इतने शांतिपूर्ण सुना। सभी श्रोताओं को और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैष्णव। Thank you, sir. I now request the technical team
to please play the national anthem of India, and I request all to please rise. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. I once again thank all the dignitaries and the participants for joining us today. With this, we have come to the conclusion of the inaugural ceremony, and we will continue to the plenary ceremony. So I hand over the session to Dr. Aditi Veda to conduct the plenary ceremony. Thank you very much, Arkal Saab. Thank you. थैंक यू Namaskar. सर Namaskar. थैंक यू सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।